viewers, welcome back to my channel, that is MU Changing Lives. Today in our grammar series we are doing types of sentences, and I'm your teacher, Mrs. Gesser. Dear students, types of sentences are very easy to identify, but mainly we have three different types of sentences according to their sense which they make. सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट देयर यूजेज, जब हम बात कर रहे होते हैं फंक्शन की, जब हम बात कर रहे होते हैं यूजेज की, मीनिंग की, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अलग हैं. आज हम जिन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं वो है उनके सेंस के अकॉर्डिंगली, वो है उनके जो वर्ब पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली. सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: a simple sentence, a compound sentence, and a complex sentence. Let's see what is a simple sentence. A simple sentence is a sentence which has just one action. One action means उसमें एक subject होगा इस sentence में जो कि कुछ perform कर रहा होगा और कोई काम कर रहा होगा, और उसमें एक action verb भी होगा. Whether any kind of verb, but a doing word will be there. So that's why we mean the simple sentence. Then we have compound sentence. Compound sentence can be easily identified by the very word compound. Compound means joining two things together to make another thing. तो कंपाउंड सेंटेंस जो है वो एक्शंस को आपस में ज्वाइन कर देते हैं जो कि दो से ज़्यादा होते हैं. और अगर दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेट कॉन्जंक्शंस के ज़रिए ज्वाइन किया जाए तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं. So dear students, please remember that there are two very important things over here. In a compound sentence, we'll always have coordinate conjunctions. Compound sentence will always be joined together by a coordinate conjunction. जैसे कि आपको यहाँ एग्जाम्पल में नजर आ रहा है, the cat pounced but the mouse ran away. But is joining the two sentences together. The cat pounced, the mouse ran away. And but is a coordinate conjunction. So compound sentences are always the sentences which are joined together by a coordinate conjunctions. Here is a list of few commonly used coordinate conjunctions, dear students, जिसमें and, but, or, yet, for, nor, and so मौजूद हैं. Then there are few things to remember here as well. कुछ चीज़ें जो आप आसानी से यहाँ पे याद कर सकते हैं जिनसे आपको कंपाउंड सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो सकती है, वो ये है दैट कंजंक्शंस, कंपाउंड कंजंक्शंस विल हैव वेरी फ्यूअर देन 4 लेटर वर्ड्स. ये 4 से कम अल्फाज पर मबनी होते हैं. कोऑर्डिनेट कॉन्जंक्शंस जो होते हैं वो 4 से कम अल्फाज से या 4 से कम लेटर्स से मिलकर बनते हैं एज कंपेयर टू द सबऑर्डिनेट कॉन्जंक्शंस विच आर द लार्जर अल्फाबेटिकल वर्ड्स. फिर हम और इसके आइडेंटिफिकेशन को आसान कर सकते हैं. एक एक्रोनिम है फैन बॉयज, जो कि इनको आइडेंटिफाई करने में बच्चों को और आसानी कर सकता है. फैन बॉयज, यू कैन रिमेंबर कोऑर्डिनेट कॉमनली यूज्ड कोऑर्डिनेट कॉन्जंक्शंस बाय द वेरी इनिशियल्स. फॉर एग्जांपल, F stands for, for and, N for neither, N for no, nor, etc. B for but, O for or, Y for yet, S for so. So these can be remembered easily by this acronym, this initial. तो आपको अगर इनको याद करने में मुश्किल हो और आपके जहन में ना आए तो फौरन याद कर ले इस acronym को, जो कि है fan boys. Fan boys are coordinate conjunctions. Then we have a very important another type of sentence, the third type of sentence, that is complex sentence. The very word complex refer to that the information through the sentences which are joined together may be more than two sentences and may not be equal of the status. यानी जिन जुमलों को आपस में ज्वाइन किया जा रहा है वो इक्वल स्टेटस के नहीं है, उन्हें अपने मतलब के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करना पड़ रहा है.
So the definition is it's a simple sentence plus a clause, subordinate clause, which adds information to the sentence. The clause here cannot stand on its own as a sentence. For example, we have a sentence, although the cat bounced, the mouse ran away. If we look thoroughly at this sentence, तो हमें यहाँ पे नजर आता है कि दो मुख्तलिफ जुमलों से मिलकर ये सेंटेंस बना है. Although the cat bounced, comma, and the mouse ran away. तो यहाँ पे जो हमारे पास जो स्लॉट है नंबर 1, although the cat bounced, ये अपने मीनिंग के लिए डिपेंड कर रहा है at the another sentence. सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो जुमले होते हैं जिनमें हमेशा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज मौजूद होता है. सबऑर्डिनेट क्लॉज से मुराद वो सेंटेंस है, वो क्लॉज है जिसे अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस की जरूरत होती है. इट कैन नॉट स्टैंड अलोन. इवन इफ यू जॉइन टुगेदर बाय एनी conjunction, it cannot stand alone. Then there is very important thing which you can identify over here. आप देखेंगे एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं. We have see, this is the house that Jack built. Now this is the house can stand alone. In another sentence, all is lost can stand alone. This is the cat can stand alone. But all the other clauses are subordinate clauses which are starting the words like that, unless, or any other subordinate conjunction. And if we just not add the first sentence, तो दूसरे जुमले का मतलब clear नहीं होता. That Jack built doesn't make any sense. Unless we act now is an incomplete slot. That chased the rat that ate the malt that lay in the house that Jack built. It does not make any sense. So that Jack builds is a clause, so it cannot stand on its own. It needs to have a main verb, which may be a secondary verb. यहाँ जो आपको verb नजर आ रहा है built, ये secondary verb है, ये main verb नहीं है. So इस sentence को एक main verb और एक ऐसे sentence की जरूरत है जो कि इसका मतलब clear करे. So the word that tells us that a subordinate clause is on its way and must be supported by the main part of the sentence, which is this is the house. So I hope the sense is clear to you. We have some common subordinate conjunctions, dear students. If there is a sentence which is started by these words, or if we are having these words added together to a subordinate clause, आप फौरन से आइडेंटिफाई कर लें कि वो जुमला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमेशा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को लेता है. और वो सबऑर्डिनेट क्लॉज इन अल्फाज से स्टार्ट हो सकते हैं या कहीं ये अल्फाज के साथ जॉइंट होके सेंटेंस के दरमियान में ये आ सकते हैं कॉन्जंक्शंस. सो जब आपने आइडेंटिफाई करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, तो आपके जहन में सबऑर्डिनेट कॉन्जंक्शंस होने चाहिए. जैसे ही आपने किसी जुमले में सबऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन देखा, आप फौरन टाइप ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लें that is going to be a subordinate conjunctions. In order to make this concept more clear to you, see, I have another presentation also which will make it very easier for you to understand. और चूँकि जो है वो आपकी जो सिलेबस की बुक्स हैं, जो सिलेबस बुक्स हैं उनमें कुछ इस तरह से आपको दिया गया है. आई एम टॉकिंग अबाउट HSCC पार्ट 1 and पार्ट 2. So it's very useful that if you have these things as well also. So we have the types of sentences over here. It will make your sense more clear because this is see a copy of your Baluchistan board book as well. So simple sentence, compound sentences and complex sentences. As the concept is clear, you can see that simple sentences are having just one main clause, one main verb. She ran through the streets. We have the subject she and then the predicate. Swimming is my favorite hobby. Swimming is the subject and followed by a predicate. Compound sentences, you can see through the examples. The student studies every night, but his grades do not show his hard work. Here the word but is what? Fanboys. Remember, fanboys, coordinate conjunction, and fanboys, remember, coordinate conjunctions. So these two sentences are joined together by a coordinate conjunctions. These sentence types are referred to as compound sentences.
And see, complex sentences. Complex sentences will always have an independent clause and a dependent clause. For example, although she studied all weekend, she still failed the test. Here we have although she studied all weekend is a dependent clause. और एक अनदर आइडेंटिफिकेशन जो मैंने आप सबको बताई है बेटा, वो ये है कि आप देखें सेंटेंस में कि क्या कोई सबऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन मौजूद है. यस, वी हैव द सबऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन ऑल्दो. In another sentence, we have a subordinated conjunction because. So it means that this sentence is a complex sentence. Here is, see, a very useful activity for identification of simple, compound, and complex sentences, which is given in your books as well. So आप इसके जरिए भी बहुत अच्छे तरीके से identify कर सकते हैं. For example, the first statement, the young seagull was alone on his ledge. It is a simple sentence because we have just subject and a predicate. We have the young seagull as a subject and was alone on his ledge is a predicate. Just one single statement. Another example, his two brothers and his sister had already flown away the day before. You see, we have just one predicate. Had already flown away the day before. So don't get confused. It is also a simple statement. It is also a simple sentence because हमारे पास यहाँ पे एक जो subject है वो है his two brothers and his sister. Single subject है. दूसरा जुमला है ही नहीं. जब दो या दो से ज्यादा जुमले होंगे तब कहीं जाके हम उसे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में आइडेंटिफाई करेंगे. द थर्ड सेंटेंस, he had been afraid to fly with them. Again we have single subject. It's a simple sentence. But for the life of him, he could not move. So we have a coordinate conjunction and two or more than two statements. See, so it's a compound sentence. The fifth one, the great expanse of sea stretched down beneath. Beneath is a coordinate conjunction. And it was such a long way down, miles down. So what type of sentence, not beneath, and is a coordinate conjunction. So this is a compound statement. The train was late. Simple sentence. He got up late but reached his office on time. These two statements, reached his office on time and he got up late, is joined together by a कोऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन विच इज बट. तो हमारे पास ये जो सेंटेंस है ये कौन सी टाइप है? ये है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस. फिर हमारे पास जो दूसरा सेंटेंस है आप देखें इसमें हमारे पास एक कॉन्जंक्शन आया है सो. So what type of statement is this? It is a compound sentence. Don't get confused that Kabir and Feroz left by bus before I arrived. You see that अगर हम इस जुमले को एज अ सिंगल स्टेटमेंट लें तो हमारे पास ये जो बिफोर है बेसिकली ये कोऑर्डिनेटेड कॉन्जंक्शन नहीं है, ये सबऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन है. तो अगर ये सिंपल स्टेटमेंट हमारे पास एक ये जुमला होता तो हम इसको कॉम्प्लेक्स में करते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बिफोर आ गया जो कि यस बिल्कुल सबऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन है. आपने बहुत अच्छा गैस किया. लेकिन चूंकि हमारे पास ये पूरा सेंटेंस एज अ स्लॉट है और फिर जो दूसरी स्टेटमेंट है आई डिड नॉट सी देम एट द बस स्टेशन एंड वी हैव सो. तो सो हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन है, लिहाजा हम इस सेंटेंस को कंपाउंड करेंगे. हमारे पास ऑप्शंस में कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है. अदरवाइज जिस जुमले में सबऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन हो और कोऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन भी हो तो उसे हम टर्म करते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. आपके पास अगर एग्जाम्स में ऑप्शन में कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आ जाए तो आप इस सेंटेंस को प्लीज उसी में ही ऐड कीजिएगा. Then look at another sentence. While he waited at the station. While is a subordinate conjunction. Definitely this is a complex sentence. I take exercise daily is a simple statement. So I hope it has made the sense very clear to you. And see, I recap the whole thought by putting up together. Simple sentence का मतलब है एक statement, एक subject, एक verb. कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब है दो या दो से ज्यादा जुमले जो आपस में कोऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन के जरिए
इकट्ठे होते हैं, join together. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहा जाता है उन सेंटेंसेस को विच आर जॉइंट टुगेदर बाय अ सबऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन. आप कोऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन, सबऑर्डिनेट कॉन्जंक्शंस की लिस्ट अच्छे से याद कर लीजिए तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा. आई होप द सेंस इज क्लियर. So please keep on watching the channel MU Changing Lives for yet another informative and very exciting video related with your syllabus of HSCC Part 1 and Part 2, KPK book as well as Balochistan board book, Federal book as well as Peshawar board syllabuses. So thank you so much for watching.